हेलो एवरीवन, दिस इज सेकंड वीडियो और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट के बारे में। वो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रैटेजी या एक प्रैक्टिस है। स्ट्रैटेजी और एक प्रैक्टिस है जिसमें इंकॉर्पोरेट किया जाएगा ईएसजी के फैक्टर्स को इनटू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और ईएसजी के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़ लिए थे, एक बार वापस रिवाइज कर सकते हैं। ई में आ गया बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट, पोल्यूशन, वाटर सिक्योरिटी। एस में आ गया लेबर, ह्यूमन राइट्स, कम्युनिटी हेल्थ, पोल्यूशन, कस्टमर के रिगार्डिंग। जी में आ गया एंटी करप्शन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, टैक्स ट्रांसपेरेंसी। ई में हमारे पास है क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स डिप्लीशन, वेस्ट, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ये इश्यूज आ जाते हैं। सोशल में हम इश्यूज कौन कौन से डील करते हैं? ह्यूमन राइट्स, मॉडर्न स्लेवरी, चाइल्ड लेबर, वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉय रिलेशन। एंड गवर्नेंस में हमारे पास आया था ब्राइबरी, करप्शन, एग्जीक्यूटिव पे, बोर्ड डाइवर्सिटी एंड स्ट्रक्चर, ट्रेड एसोसिएशन एंड लॉबिंग एंड डोनेशन एंड टैक्स स्ट्रैटेजी। तो अगर ये पता होगा तो हमें ईएसजी मोटा मोटा क्या होता है वो पता हो जाएगा। तो इसलिए ये बोल रहे कि रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट इज ए स्ट्रैटेजी एंड प्रैक्टिस जिसमें इंकॉर्पोरेट किया जाएगा ईएसजी के फैक्टर्स को इनटू इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड एक्टिव ओनरशिप ऑल्सो. It is sometimes used as an umbrella term for some all of the investment approaches mentioned in the following subsections. At a minimum, responsible investment consisting of mitigating risky ESG practices in order to protect value. To this end, it considers both how ESG might influence the risk-adjusted return of an asset and the stability of the economy, and how the investment in and engagement with an asset and investees can impact society and environment. सोशल अब ये अम्ब्रेला टर्म है रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट SRI रेफर्स टू एन अप्रोच जिसमें अप्लाई किया जाएगा सोशल एंड इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया इन एवेलुएटिंग कंपनीज. Social and environmental criteria in evaluating companies. Investors' implementation SRI generally score companies using a chosen set of criteria, usually in conjunction with sector-specific weighting. A hurdle is established for a qualification within the investment universe, based either on the full universe or sector by sector. Sector by sector, this information serves as a first screen to create a list of SRI qualified companies. So इसमें क्या होगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, इसमें एक लिस्ट बनेगी, उसी में पैसा डाला जाएगा, या तो कंपनीज की लिस्ट बनेगी या इंडस्ट्री सेक्टर्स की लिस्ट बनेगी. SRA ranking can be used in combination with best in class investment, thematic funds, high conviction funds और quantitative investment strategies. अब आ गया बेस्ट इन क्लास इन्वेस्टमेंट के. देखो, बेस्ट इन क्लास इन्वेस्टमेंट ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव स्क्रीनिंग, ये पता होना चाहिए. इन्वॉल्व सेलेक्टिंग ओनली दोज कंपनीज दैट ओवरकम अ डिफाइंड रैंकिंग हर्डल इस्टेब्लिश यूजिंग ESG क्राइटेरिया विद इन ईच सेक्टर और इंडस्ट्री. इसमें होगा कि कुछ हर कंपनी का कोई मायार होगा ESG का, तो वो अगर वो स्टैंडर्ड ESG का वो कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, जैसे कार्बन फुटप्रिंट इनका इतना होना चाहिए, ये इन इंडस्ट्री में नहीं हो, इनका परफॉर्मेंस होना चाहिए, जैसे टोबैको ना हो, अल्कोहल ना हो, पोर्नोग्राफी ना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो वो इसके रिगार्डिंग ना हो, ऐसी इंडस्ट्रीज ना हो, तो वो पॉजिटिव स्क्रीनिंग की जाएगी. सिलेक्ट करेंगे ओनली दोज कंपनी डेट ओवरकम ए डिफाइंड रैंकिंग हर्डल. इसमें हमारे पास आता है टिपिकली कंपनीज आर स्कोर्ड ऑन ए वैरायटी ऑफ फैक्टर्स दैट आर वेटेड अकॉर्डिंग टू द सेक्टर. The portfolio is then assembled from a list of qualified companies. Bear in mind, though, that not all best-in-class funds are considered responsible investments, but due to its all-sector approach, best-in-class investment is commonly used in investment strategies that try to maintain certain characteristics of an index. In these cases, security selection seeks to maintain regional and sectorial diversification along with a similar profile to the parent market cap index while targeting companies with higher ESG rating. The tracking error for MSCI World SRI which is designed to represent the performance of companies with high ESG rating and employs a best-in-class selection approach to target the top 25% companies in each sector is only 1.79%. अब हमारे पास आ जाता है कि इन्होंने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SRI इंडेक्स यूजिंग बेस्ट इन क्लास अप्रोच. तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतनी है, फाइनेंशियल में इतनी है, हेल्थ केयर में इतनी है. इन्फो IT इंडस्ट्री है ना, IT इंडस्ट्री इज लीडर इन ESG रेटिंग, आप देख सकते हैं. उसके बाद फाइनेंशियल, फिर हेल्थ केयर, फिर इंडस्ट्रियल, फिर कमर्शियल, फिर कंज्यूमर, फिर कम्युनिकेशन, मटेरियल, एनर्जी, गुड, रियल एस्टेट एक्सेट्रा. अब अगर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ एसेट जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन सम वे टू ए सस्टेनेबल इकोनॉमी. That is an asset that minimize natural and social resource depletion. तो ये आ गया, ये माइनिंग वाली इंडस्ट्री में नहीं आएगा. It is a broad term with a broad range of interpretation that may be used for the consideration of typical ESG issues. It may include best in class and ESG integration, which consider how ESG
इश्यूज इम्पैक्ट करेंगे सिक्योरिटी रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल को. It is further used to describe companies with positive impact of companies that will benefit from sustainable macro trends. The term sustainable investment can also be used to mean a strategy that screens out activities considered contrary to long-term environmental and social sustainability, such as coal mining or exploring for oil in the Arctic region. अब आगे thematic investment. Thematic investment is investment in themes or assets specifically related to ESG factors such as clean energy, green technology, sustainable agriculture, gender diversity, or affordable housing. This approach is often based on needs arising from economy or social trends. Two common investment themes focus on increased demand for energy and water and the availability of alternative sources of each. Global economic development has raised the demand for energy at the same time as increased greenhouse gas emissions are widely believed to negatively affect the Earth's climate. Similarly, rising global living standards and industrial needs have created a greater demand for water and need to prevent drought or increase access to clean water drinking water in certain regions of the world. While these themes are based on trends related to environmental issues refer to the following subsections: social issues such as access to affordable healthcare and nutrition, especially in the poorest countries in the world, are also of the great interest to thematic investor refer to subsequent social investment section. Bear in mind, though, that not all the thematic funds are considered to be responsible investment or best in class. Becoming such a fund depends not only on the theme of the fund but also on the ESG characteristics of the investing companies. Green investment क्या होता है? It refers to allocating capital to assets that mitigate climate change, biodiversity loss, resource inefficiencies and other environmental challenges. तो इन ग्रीन इन्वेस्टमेंट में रेफर करेंगे एलोकेट करना कैपिटल उन एसेट्स में उन कंपनीज में जो मिटिगेट करेंगे क्लाइमेट चेंज को, बायोडाइवर्सिटी के लॉस को, रिसोर्स इनएफिशिएंसीज को and other environmental challenges. These can include low carbon power generation and vehicles, smart grids, energy efficiency, pollution control, recycling, waste management and waste of energy, and other technologies and processes that can contribute to solving particular environmental problems. उसके बाद green investment can thus be considered a broader subcategory of thematic investing or impact investing. Green bonds are a type of fixed income instrument that is specifically earmarked to raise money for climate and environmental projects and are commonly used in green investing. Further detail green bonds के बारे में पढ़ना चाहते हो तो चैप्टर 3 में पढ़ेंगे. सोशल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? देखो, सोशल इन्वेस्टमेंट refers to allocating capital to assets जो एड्रेस करते हैं सोशल challenges को. These can be products that address the bottom of pyramid. BOP refers to the poorest two-thirds of the economic human pyramid, a group of more than 4 billion people living in poverty. More broadly, BOP जैसे बॉटम ऑफ पिरामिड का क्या, अब BOP क्या, सोशल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो रेफर करता है एलोकेट करना उन एसेट्स में, एड्रेस करना उन सोशल चैलेंजेस को. दीज और ये एड्रेस की जाएंगे BOP को क्या, बॉटम ऑफ पिरामिड. BOP पूरेस्ट टू-थर्ड ऑफ द इकोनॉमिक ह्यूमन पिरामिड है जो कि ग्रुप्स ऑफ मोर देन 4 बिलियन पीपल लिविंग इन पॉवर्टी. ब्रॉडली BOP refers to market based model of economic development that seeks to simultaneously alleviate poverty while providing growth and profits for businesses serving these communities. Examples include microfinance and microinsurance, access to basic telecommunication, access to improved nutrition and healthcare, and access to clean energy. Microfinance and microinsurance, basic telecommunication, access to improved nutrition and healthcare, and access to clean energy. Social investing can also include social impact bonds, which are a mechanism to contract with these public sectors. These sectors pays for better social outcome in certain services and passes on part of the social savings achieved to investors. आगे हमारे पास आया था कि इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग क्या होती है. देखो, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट मेड विद द स्पेसिफिक इंटेंट ऑफ जनरेटिंग पॉजिटिव मेजरेबल सोशल और environmental impact alongside a financial return, which differentiate it from philanthropy. It is the relatively smaller segment of the broader responsible investing market. Impact investing is usually associated with direct investments such as private debt, private equity, and real estate. However, in recent years, impact investing has increasingly become mainstream in the public market. Impact investment can be made in both emerging and developed markets. They provide capital to address the world's most pressing challenges. An example is investing in products or services जो हेल्प करते हैं अचीव करने में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन के हैं 2015 में इशू किए गए थे. अगेन इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में हमने वो पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट करनी है उन स्पेसिफिक इंटेंट विद स्पेसिफिक इंटेंट ऑफ जनरेटिंग पॉजिटिव मेजरेबल एंड सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. पॉजिटिव
measurable social environmental impact alongside a financial return which differentiate it from philanthropy. It is a relatively smaller segment of the broader responsible investing market. Impact and investing is usually associated with direct investments such as in private debt, private equity, real estate. However, in recent years, impact investing has increasingly become mainstream in the public market. Impact investment can be made in both emerging and developed markets. They provide capital to address the world's most pressing challenges. An example is in investing in products and services that can help achieve one or more 17 SDGs launched by UN. SDG 6 क्लीन वाटर सैनिटेशन पे बात करता है, इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल. एंड SDG 11 वो बोलता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ के बारे में बात करता है. इसमें बोलता है कि वो सिटीज़ बनाई जाए, वो ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव बनाई जाए, सेफ रेजिडेंट और सस्टेनेबल बनाई जाए. Measurements and tracking of the agreed upon impact generally lie at the heart of the investment propositions. Impact investors have diverse financial return expectations. Some intentionally invest for below market rate returns in line with their strategic objection. Others pursue market competitive and market beating returns, sometimes required by fiduciary responsibility. The global impact investing जो network है ना, it is estimated that the size of the global impact investing market to be $502 billion, और जिसे $61 billion भी कहा जा सकता है. पर हम डॉलर में बात करते हैं. $502 billion ग्लोबल इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग नेटवर्क हैज एस्टिमेटेड की साइज ऑफ ग्लोबल इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग मार्केट कितना बड़ा होने वाला है. इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट हैव डाइवर्स financial return expectations. Some intentionally invest for below market rate returns in line with their strategic objectives. Others pursue market competitive and market beating returns, sometimes required by fiduciary responsibilities also. उसके बाद दोस्तों इन्होंने बताया कि ग्लोबल जो इम्पैक्ट है ना, जो ग्लोबल ये इस ग्लोबल इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट नेटवर्क है, इसका साइज़ बताया. साइज़ कितना को तो आप देख सकते हैं. इसका साइज़ ये बोल रहे हैं $502 बिलियन बता रहे हैं. तो ये 502 बिलियन कम नहीं होता. और ये यहाँ पे बोलते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो मैनेजर्स हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं, उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है मार्केट बीटिंग रिटर्न्स में. मार्केट कॉम्पिटिशन को परस्यू करना पड़ता है. क्यों करना पड़ता है? उनकी फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पर फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि उनके पास दूसरों का पैसा है. अब उनके पास दूसरों का पैसा है तो उनको उनके बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अनदर पार्टी उसी में काम करना पड़ेगा ना. तो उनको काम ऐसा करना पड़ेगा विच विल रिजल्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अदर पार्टी, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट. एनुअल सर्वे इंडिकेट करता है कि 66% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग परस्यू कॉम्पिटिटिव मार्केट रेट रिटर्न्स. आगे हम पढ़ लेते हैं कि एथिकल और वैल्यू ड्रिवन एंड फेथ बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है. इसमें हमारे पास कुछ हैं अच्छे वाले टॉपिक्स कि वो क्या उनसे होते हैं. जैसे इन्होंने बोल रहे हैं कि एथिकल और फेथ बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हमारे पास एग्जांपल है कि इट रेफर्स टू इन्वेस्टिंग इन लाइन विद सर्टन प्रिंसिपल्स, often using negative screening to avoid investing in companies whose product services are deemed to morally objectionable by the investor or certain religious international declaration convention voluntary agreements. जैसे कि टबैको में नहीं करेंगे, अल्कोहल में नहीं करेंगे, पोर्नोग्राफी में नहीं करेंगे, वेपन्स में नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट सच एज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं करेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, on fundamental principles and right at work नहीं करेंगे. From religious individuals to large religious organizations, faith-based investment have a history of shareholder activism to improve the conduct of investing companies. Another popular strategy is portfolio building with a focus on screening out the negative, in other words, avoiding sin stock or other assets that add odds with their belief. In the following subsection we cover few example of faith-based negative screening. उसमें vegan वाले भी आ जाएंगे, उनका भी एक नया रीजन स्टार्ट हो गया. Christian investors wishing to put their money to work in a manner consistent with Christian values seeks to avoid, in addition to the activities listed previously, investing in firms that facilitate करती हैं abortion, contraception or embryonic stem cell research or involved in the production of sale of weapons. तो क्रिश्चियन जो है फिलासफी का अगेंस्ट है तो उसमें नहीं करेंगे. They often favor firms that support human rights, environmental responsibility and fair employment practices via the support of labor union. फिर शरिया आ गया. शरिया में बोला गया कि फॉलो करना इस्लामिक रिलीजियस प्रिंसिपल्स को that cannot be do the following which what they cannot do. Investment in firms जो
प्रॉफिट फ्रॉम अल्कोहल होगा, पोर्नोग्राफी होगा, गैम्बलिंग होगा. इन्वेस्टिंग करना इन कंपनीज दैट कैरी हाई डेट लोन्स एंड देयरफॉर पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट पे इंटरेस्ट लाइज विद फर्म्स दैट अर्न अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द इंटरेस्ट. और इन्वेस्ट करना पोक रिलेटेड बिजनेस, पोक रिलेटेड बिजनेस में नहीं करना. एग्जिबिट 6 शो करता है नेगेटिव स्क्रीनिंग स्ट्रेटजी फॉर वेरियस. तो क्रिश्चियन फंड में ये नहीं होगा, इस्लामिक में ये नहीं होगा, SRI में ये नहीं होगा. SRI के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट में ये नहीं होगा, तीनों नहीं होगा. तो क्रिश्चियन में ये नहीं होगा. एंटी फैमिली एंटरटेनमेंट, मैरिज लाइफस्टाइल, अबॉर्शन, ह्यूमन राइट, वर्कर राइट, बायोएथिक्स, वेपन्स, हाई लिवरेज कंपनीज, ये इस पे और इस पे बात नहीं करता. SRI इस पे बात नहीं करता, इससे बात नहीं करता, इस पे बात नहीं करता. जो इनमें गड़बड़ करने से नहीं करेगा. शेयर होल्डर एंगेजमेंट reflects active ownership by investors in which the investor seeks to influence a corporation decision on ESG matters either through dialogue with corporate officers or votes at a shareholder assembly. It is seen as a complement to the previously mentioned approaches to responsible investment as a way to encourage companies to act more responsibly. Its efficacy usually depends on the scale of ownership of the individual investors or the collective initiatives, the quality of the engagement dialogue and the method used, and whether the company has been informed by the investors that divestment is a possible sanction. For further details on the process of engagement, see Chapter 6. ESG investing also recognized that the generation of long-term sustainable returns is dependent on stable, well-functioning and well-governed social, environmental and economic system. This is so-called triple bottom line coined by the business writer John Ellington. दोस्तों सबसे पहले हम पूरी किताब को एक बार पढ़ लेंगे, फिर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ चीज़ों में उसके ऊपर और रिसर्च करेंगे कि जॉन एलिंगटन महाराज ने और क्या बोला हुआ है. और बहुत सारे टॉपिक मैंने रिसर्च किए हैं, हाईलाइट किए हैं, तब उनके बारे में एक बार वापस गो थ्रू करेंगे. फिर उसके बाद जो सब टॉपिक्स होंगे जिसके साथ पढ़ने ज़रूरी होने चाहिए और जो पढ़ने चाहिए हमको, हम वो और पढ़ लेंगे. तो इससे एक रिविजन भी हो जाएगी और मोर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. For further details on the process of engagement, see Chapter 6. ESG investing also recognizes that the generation of long-term sustainable returns is dependent on stable, well-functioning and well-governed social, environmental and economic system. This is so-called triple bottom line coined by stable होना चाहिए, well-functioning होना चाहिए, well-governed होना चाहिए. However, since its inception, the concept of TBL, triple bottom line, coined by business writer John Ellington, evolved from holistic approach to sustainability and further into an accounting tool to narrowly manage trade-offs. Therefore, Ellington recalled the term in 2018 Harvard Business Review में. Ultimately, ESG investing जो recognizes the dynamic interrelationship between social, environmental, and government issues and investment. It acknowledge that social, environmental, and governance issues may impact the risk, volatility, and long-term return on securities. Okay, very good. And investment can both have positive and negative impact on the society and the environment. Investment can have positive and negative both impacts. और ये जो social, environmental, governance के जो issues हैं ना वो impact करते हैं risk को, volatility को और long-term return on securities पे भी. Corporate social responsibility, the CSR, very popular term. The concept of ESG investing is closely related to the concept of investees' corporate sustainability. Corporate sustainability is an approach aiming to create a long-term stakeholder value through the implementation of business strategy जो focus करते हैं ethical, social, environmental, cultural, economical dimension of doing what, of doing business. Related to this approach, corporate social responsibility (CSR) is a broad business concept that describes a company commitment to conducting its business in an ethical way. Throughout 20th century and until recently, many companies have implemented CSR by contributing to society through philanthropy. While such philanthropy may indeed have a positive impact on communities, modern understanding of CSR recognize करता है that a principle-based behavioral approach can play a strategic role in a firm business model, which lead to the theory of TBL. A TBL accounting therefore expands the additional accounting framework focused on only on a profit to include two other performance areas: the social and environmental impacts of the company. Thus, these three bottom lines are often referred as 3P: people, planet, and profit. People, planet, and profit. While the term, so एक चीज़ याद रखो, जो ESG basically deal करता है people, planet, और profit पे. While the term and the concept are useful to know, including for historical reasons, they have been replaced in the industry with a broader framework of sustainability, and that is not restricted to accounting only. Again, जो हमने पढ़ा ट्रिपल बॉटम लाइन अकाउंटिंग, जो ट्रिपल बॉटम लाइन पढ़ी और ट्रिपल बॉटम लाइन अकाउंटिंग बन चुका था. उन्होंने बोला कि वाइल सच फिलॉन्थ्रपी इंडीड हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटीज,
मॉडर्न CSR रिकॉग्नाइज करता है प्रिंसिपल बेस्ड बिहेवियर अप्रोच दैट कैन प्ले स्ट्रेटेजिक रोल इन बिजनेस मॉडल विच लाइड टू थ्योरी ऑफ TBL. देयर इज थ्योरी ऑफ TBL ऑल्सो, जो हमें पता होना चाहिए. TBL अकाउंटिंग थ्योरी एक्सपैंड करती है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में और फोकस करती है ऑन अ प्रॉफिट टू इंक्लूड 2 अदर परफॉर्मेंस एरियाज ऑल्सो, जिसमें सोशल और इन्वायरमेंट की बात की है जो इंपैक्ट करते हैं कंपनी को. 3 बॉटम लाइन्स आर ऑफ्टन रेफर्ड एज 3P, जो कि हैं 3 bottom lines are often referred as 3P, जिसमें people, planet और profit की बात की गई. While the term and the concept are useful to know, indicating the historical reasons, they have been replaced in the industry with a broad framework of sustainability that is not restrained to accounting. Effective management of company sustainability can include all these things. First, reaffirm करना कंपनी के लाइसेंस को to operate करने in the eyes of the government and civil society. Increase करना efficiency को. Reaffirm करना company license to operate in the eyes of government and civil society. And attend to increase regulatory requirements. Reduce the probability of fines. Improve employee satisfaction and productivity, and drive innovation and introduce new product lines. ESG investing recognize करता है these benefits and aims to consider them in a context of security, asset selection, and portfolio construction. There are many organizations and institutions contributing to the further exploration of interaction between society, environmental and governance and investment. These curriculum focus करेगा how professionals in the investment industry can better understand, assess and integrate ESG के issues को while conducting stock selection, carrying out portfolio construction and engaging करना with companies. अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे पास आ जाएगा मैक्रो लेवल डिबेट ऑन ESG इंटीग्रेशन. इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करो बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ESG के इन डिसीजन मेकिंग. लिंकेज क्या है बिटवीन द रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी. तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहे हमारे साथ, हम ये टॉपिक कवर करेंगे. उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो. मैं थोड़ा तेज से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी है और ज़्यादा कुछ ज्ञान, वही चीज़ बार बार रिपीट है. तो जब कोई अच्छी चीज़ मिलेगी तो फिर मैं आराम से स्लो डाउन हो जाऊँगा. और जब मैं इसको दूसरी बार जब मैं इसको रिवाइज़ करूँगा इस ग्रीन पोर्शन को सिर्फ, तो हम देन थोड़ा स्लो डाउन हो जाएंगे. और जो लिंकिंग टॉपिक्स हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन एलिंगटन ने ट्रिपल बॉटम लाइन दिया और जॉन एलिंगटन ने और भी कुछ बातें की होंगी, तो हम वो थोड़ा आहिस्ता वो टच कर लेंगे. इतनी सारी जो स्पेस जो पड़ी है हमारे पास यहाँ पे, हम वो इस स्पेस में कुछ और अपने नोट्स ऐड करेंगे ताकि हमें और अच्छी तरीके से चीज़ें समझ आ सकें. ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर.